ओडिशा विकास पथरे अग्रगति करुछि। कोनोसी प्रकार होहाला न करी निरवतार सह ओडिशा निजर विकास यात्रा जारी रखिछि। आमर काम ही यथेष्ट। मात्र 2 दशंधि मध्यरे ओडिशा रूपांतरण एवं सशक्तिकरणर उदाहरण पालटिछि। ओडिशा आज विपर्यय परिचालना और खाद्य सुरक्षा मॉडल होइछि। नारी सशक्तिकरण रे मॉडल होइछि। अंतर्जातीय क्रीड़ा आयोजन सहित प्रशमन करिवारे ओडिशा अग्रणी भूमिका ग्रहण करिछि बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिसंति। भुवनेश्वर में न्यूज 18 ओडियार राइजिंग ओडिशा कार्यक्रम में सामिल होई मुख्यमंत्री कहिसंति जे देश विदेश रे ओडिशा को एबे मॉडल भावे ग्रहण करा जाउछि। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना लक्ष लक्ष लोकंक भरोसा पालटिछि। मालकानगिरीर दुर्गम गाँव में स्मार्ट श्रेणीगृह रे पिला डिजिटल बोर्ड माध्यम पाठ पढ़ुछंती। यह हेउछि विकास। पुंजी निवेश रे निवेशकंक द्वितीय पसंद पालटिछि ओडिशा। एबे राज्य रेवेन्यू रे बळका राज्य पालटिछि। आर्थिक विकास रे ओडिशा भारतर अनेक राज्य को पछरे पकाई आगो को बढ़ी चली। राज्यर विकास धारा रे 5T एक प्रमुख भूमिका नेछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंति। कार्यक्रम में सामिल हेबा परे ट्वीट करी मुख्यमंत्री कहिसंति रूपांतरण एवं सशक्तिकरणर यात्रा रे ओडिशा होइछि सफल। विपर्यय परिचालन रे ओडिशा साजिछि मॉडल राज्य। महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा रे मध्य ओडिशा अग्रणी। अंतर्जातीय क्रीड़ा आयोजन एवं प्रोत्साहन रे ओडिशा एक विश्व पई मॉडल साजिछि। बीएसकेवाई लोकंकु तृणमूल स्तर सशक्त करिछि। पुंजी आकर्षण रे ओडिशा द्वितीय श्रेष्ठ राज्य पालटिछि। किछि वर्ष हेला ओडिशा राजस्व बळका राज्य होइछि। आगामी किछि वर्ष मध्यरे ओडिशा श्रेष्ठ 3 राज्य मध्यरे रहिथिबो बोली नवीन कहिसंति। At the outset, I thank the News 18 group for taking up the topic Rising Odisha. The topic for deliberations here itself is an indicator that the Odisha story has attracted the attention of the entire country. Yet, yes, Odisha is rising, and we are doing it without making much of a noise. Our actions speak for themselves. In just 2 decades, Odisha is now a story of transformation and empowerment. Today, Odisha is a model in disaster management and a net food security provider. Today, Odisha is a model in women empowerment. Today, Odisha is a global model in hosting international sporting events and promotion of sports. The Biju Swasthya Kalyan Yojana has empowered people at the grassroots level. After the high school transformation, a student in a remote village in Malkangiri is now studying in smart classrooms with digital boards. This is transformation. This is empowerment. Odisha is also the top 2nd state in attracting investments. For the last several years, Odisha has remained a revenue surplus state. From the bottom of the ranking among states, Odisha has now left many states behind in economic growth. We believe we will be among the top 3 states in a few years from now. All this has been made possible because our new look governance, a transformative model of governance powered by the 5T initiative. And in every bit of transformation, we are determined to leave no one behind. We have ensured that the poorest of the poor must feel that he or she is a partner of this transformational journey. Rising Odisha is the story of transformation of the entire 4.5 crore people of Odisha. I have always held them
as members of my family. Thank you, Bande Utkal Janani. In just a few days from now, Shri Naveen Patnaik will complete 24 years as the Chief Minister of this great state of Odisha. Mr. Patnaik, congratulations on this upcoming and momentous milestone. Your longevity in the highest office in the state is a remarkable achievement. But what is even more noteworthy is the source of your popularity. For nearly a quarter century, you have stayed intimately connected with the hopes and concerns of the common citizen of Odisha. Your dignity shines through in your public and private interactions. It is therefore no wonder that your popularity spans all sections of society. I will cite a personal example from this morning when I was boarding my flight from Mumbai to Bhubaneswar. I was seated between two very senior executives of corporate India, both representing very large, respected corporate groups. They spent an hour raving about the state's finances, the revenue surplus, and the high standards of governance in Odisha. One of them told me about Mission Shakti, the self-help group scheme for women, which is one of its kind in the world. The other boasted about the health insurance scheme and said that it is many times better than NHS in the UK. Naveenji, when corporate executives who are somewhat cynical and hard-boiled, when they talk in terms like these, I think there is something definitely very special happening in Odisha. Chief Minister, you have put Odisha on a sustained path of growth and development in all dimensions. From science and spirituality to technology, sports and tourism, Odisha is moving ahead resolutely and irreversibly. Rising Odisha is our celebration of the state's achievements and its aspirations. It is my great honor to welcome you to the celebration, and I thank you for gracing this event as the chief guest. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the Chief Minister. 5T रूपांतरण पर नुआ रूप नहीं विद्यालय क्लासरूम एवं स्मार्ट होईछि स्मार्ट क्लासरूम पई पिलांक मध्यरे पढ़िबा पई आहुरी उत्साह बढ़िछि न्यूज 18 ओडिया राइजिंग ओडिशा कार्यक्रम रे शामिल होई यहा कहिसंती ओसेपा निर्देशक अनुपम साहा से आहुरी मध्य कहिसंती एबे राज्य रे स्कूल रे ड्रॉप आउट ह्रास पाइछि गत 2 रु 3 वर्ष धरी 10 रु 12% को खसिछि ड्रॉप आउट किभଳି शैक्षिकता वातावरण सृष्टि होई पारिबो ता उपरे विशेष भाव रे ध्यान दिया जाउछि जहाँ फल ड्रॉप आउट संख्या कमी कमी चली 5T आसिबा परे पिलांक मध्य उत्साह सह आत्मविश्वास भी बढ़ी मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे राज्यर विद्यालय रूपांतरण करा जायछि ओडिशार 75 रु 80% पिला सरकारी स्कूल रे पाठ पढुछंती किभଳି अधिकरु अधिक पिला सरकारी स्कूल रे पाठ पढिबे सेति पई व्यवस्था करा जाउथवा कहिसंती अनुपम साहा सेबले नाइजर डीन प्रणय स्वाई सरकार 5T रूपांतरण कार्यक्रम को प्रशंसा करिसंती पिलांक मध्यरे पाठ पढ़िबा पई यह आत्मविश्वास सृष्टि करितबा से कहिसंती ड्रॉप आउट हमर कमिबा स्टार्ट करिछि मझिरे हमर ओडिसा रे ड्रॉप आउट को नै कि पेपर रे मध्ये बाहरितला कि ओडिसा रे ड्रॉप आउट बेसी अछि बोली बट लेट मी टेल इट्स ए 3 ईयर ओल्ड डेटा सम 27% हमर आस्तला ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी रे जोटा कि 2021 रो डेटा so if you take this year's data that is 23-24 which is not yet officially out I can share that it's around 10 to 12%. So from 27% we have like come down to 10 to 12%. Around 75-80% pila government school re hi achanti. So we are like taking care of the bulk of the population. Among private school re obviously in the urban area, district headquarter, block headquarter re joti भी private school अछि सेठी पिला माने जाउछन्ते private school को. As far as the image of the schools are concerned, high school transformation रे सेटा हमरो फर्स्ट लक्ष्य थिला कि केमते गुडी इमेज मेकओवर हबो. तो आपण देखिथिबे हमरो हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर 5T रे हमरो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत गुरुत्व दिया हेतिला समस्त स्कूल मानकर केमती गुड ऑप्टिक्स बेटर से माने केमती दिसिबो स्कूल गुडा तांकर स्कूल बिल्डिंग भलो हबार अछि क्लासरूम स्मार्ट हबार अछि टॉयलेट गुडा सब भलो हबार अछि ड्रिंकिंग वाटर रहिबार अछि तो से सब जिंस को फोकस करा हेतिला
the scheme is running for more than 2 years now. तो आपने भी देखुथिबे the schools look very different. See, smart classroom, IT enabled teaching is the thing now. आपण ताकू ग्रहण न कले बहुत पछरे रही जिवे जेमति मु कहउतले आम जनरेशन कथा आमे पछरे रही जाउथुल बिकॉज़ हमको एक्सपोजर मिल नथला. द वर्ल्ड हैज मूव्ड अहेड. कोविड टाइम रे आमे देखिलु कि क्लासरूम रो सब्स्टिट्यूट किछि नाही. टीचिंग ट्रांजैक्शन रा क्लासरूम रे जेमति हुए बाकी कोठी हेई परिबनी. बट एई सिचुएशन हमको फोर्स कला टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, आ गोटे सक्सेसफुल अल्टरनेटिव. तेणु वर्तमान आपण करिकुलम देखि दियंतु एलिमेंटरी लेवल टू आरंभ करी कि हायर लेवल हायर एजुकेशन लेवल रे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे बहुत इजी. बट ये जो एजुकेशन आम जो पिरामिड एलिमेंटरी लेवल रे जो क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम आम ओडिशा गवर्नमेंट बर्तन इनिशिएट करिछि सेटा आपन को गोटे यंग स्टेज रे एक्सपोजर दबो केमिता को आपण यूज करी कि आगु को बढ़िबे.